Hello students, welcome to Affinity Digital. Today we will be starting with the solution of full length test number 4. Starting with the first question, placenta is the region. Placenta जो है वो maternal endometrium and fetus का जो chorion and allantois part है उसका combination होता है. Placenta acts as a fetal lung. It helps in providing nourishment to the fetus. It helps in excreting the metabolic waste from the fetus, and also it acts as a temporary endocrine gland जो कि hormone secretion में मदद करेगा. So we will go with the option number 3, that is fetus receives nourishment from the mother's blood through placenta. Moving to the next question, how many copies of the DNA sample are produced in PCR technique after 6 cycles? So we will go with the formula 2 to the power n. यहाँ पे अगर हम 2 to the power 6 रखते हैं, then our value will be 64. So the final answer is 64. Now is question number 153. Match the column. बच्चों cerebrum दिया गया है first column में, and we will combine this with the limbic lobe, क्योंकि cerebrum में लिम्बिक सिस्टम होता है, मौजूद होता है, जो कि एकदम इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम लोकेट होता है. सेरिबेलम जो है बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में मदद करेगा. सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर 5. हाइपोथैलेमस कंटेन्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. सो ऑप्शन नंबर 1. मिड ब्रेन जो है उसमें कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एंड ये हमारे विजुअल and auditory reflex को control करता है. So we will go with option number 2. Option number 2. So it is 4, 5, 1 and 2. 4, 5, 1 and 2. Question number 154. Which of the following event of the cardiac cycle does not ever coincide? कभी वो coincide नहीं करेगा. So for our help, we will make 2 circles, one inside another. We will divide the circle into 8 halves. बाहर का जो circle है, it is represented by atrium, and अंदर का जो circle है, it stands for the ventricle. Now let us give the timing. Each circle is representing 0.1 second. Total 0.8 second. जब atria contract करेगा, the shading part is representing the systole. Atria जब contract करेगा, तब ventricle relax करेगा. Atria का contraction over होने के साथ साथ उसी दौरान वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट करेगा फॉर 0.3 सेकेंड. So we will be taking 3 channels. Now let us relate. Ventricular systole and atrial systole. Ventricle जब systole कर रहा है तब क्या atrial systole कर रहा है? नहीं. Ventricle जब systole कर रहा है तब जब atrial systole कर रहा है तब ventricle relax करता है. So ventricular systole and atrial systole never coincide. Atrial जब relax कर रहा है तब ventricle diastole कर रहा है. Atrial diastole and ventricular diastole, yes, ये हम देख पाते हैं इस पोर्शन में. जब ventricle relax कर रहा है तब atria भी relax कर रहा है, right? So yes, they coincide each other. Ventricle जब systole कर रहा है तब एट्रिया डायस्टोल कर रहा है. जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तब एट्रियल डायस्टोल हो रहा है. दिस इज आल्सो ट्रू. एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल. एट्रिया जब सिस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है. दिस आल्सो कोइंसाइड. सो हम लोगों के ऑप्शन में ओनली 1 आ रहा है, ओनली ए आ रहा है. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 154. Which of the following can activate the chemosensitive area situated adjacent to the rhythm center? बच्चों chemosensitive area जो हमारे मेडुला में लोकेटेड है,
near the respiratory rhythm center. ये सेंसिटाइज तभी होता है जब ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी बढ़ जाता है, तो इन दोनों को वो डिटेक्ट कर सकते। तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लेस नहीं होगा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेस तो नहीं होगा। So question number 155, it is option 2. Parturition is induced by, parturition, it is directly from NCERT, it is a neuroendocrine mechanism which is not simple, ये बहुत सारे combination, बहुत सारे complex को मिला के होता है, तो it's a complex neuroendocrine mechanism. Correct sequence in the development of the human embryo, it is fertilization, zygote, which undergoes cleavage to form morula, blastula and gastrula. Correct है ये. बाकी fertilization, zygote, blastula नहीं आएगा, पहले morula आ जाएगा. Fertilization, cleavage उसके बाद नहीं आता है. Cleavage पहले नहीं होता है. So we will go with the option number 1. So question number 158, the correct sequence of the meninges from outside to inside. तो आउटसाइड में होगा ड्यूरा मैटर, followed by arachnoid, followed by pyometer. So this should be the sequence, and our correct sequence here is option 1, that is dura mater, arachnoid and pyometer. Question number 159, which among the following is incorrect about the cellular level of organization? तो cellular level of organization मतलब यहाँ पे सेल, बहुत सारे सेल कंबाइन होके एक होल ऑर्गेनिज्म बनाएगा. इट इज शोन बाय पॉरीफेरा. तो पहला ऑप्शन दिया गया है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड टू फॉर्म द होल बॉडी एज वी सी इन केस ऑफ पॉरीफेरा. दैट इज ट्रू. ईच सेल कैरीज ओवर अ स्पेसिफिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ना टिश्यू है ना ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है, तो हर एक काम एक सेल को ही परफॉर्म करना पड़ता है. There are number of cells that perform different functions. For example, arcuocytes are there. They are primitive cells. जैसे कि कुछ cells होते हैं कोएनोसाइट्स are there, जो कि flagellated होता है और वो water circulation में मदद करेगा. Next is this level of organization is also called as the cell aggregate of the body plan. That is true. Hydra जो है वो exhibit करता है. No, Hydra doesn't exhibit. They exhibit tissue level of organization. तो ये हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4. नाउ दिस इज फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे आइडेंटिफाई करने दिया गया है कि कौन सा हिस्सा क्या इंडिकेट कर रहा है. तो डी इतना क्लियर नहीं है डायग्राम, सो दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी. तो डी जो है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है. दिस वन. ए जो है that is the anterior pituitary. So A, anterior pituitary, these two are correct. Then B is posterior pituitary, this is correct. This is also correct. ठीक है. C, they are showing the blood vessel, that is the portal circulation, and this is D के साथ भी नहीं मैच हो रहा है. So we will go with the option number 3. Okay. And question number 161, which of the following organ other than kidney helps in the elimination of the excretory waste? It is lung, yes, correct. Liver, sweat gland and sebaceous gland, both are present in the skin. So it is A, B, C and D. Which embryonic development, during embryonic development, the heartbeat begins at the end of, it begins at the end of first month. फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन, ये सब हो जाता है. हार्ट बीट स्टार्टिंग हो जाता है. एंड हार्ट बीट जो है यही इंडिकेशन है कि बच्चा जो है वो अभी उसका ग्रोथ हो रहा है. ठीक है. सो इट बिगिंस बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ. नेक्स्ट इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल शेयर अ 4-chambered हार्ट?
एम्फीबियंस शेयर नहीं करेगा, ना ही रेप्टाइल करेगा, बर्ड्स करेगा. हाउएवर क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी क्रोकोडाइल, लिजर्ड नहीं होगा. So we will go with option number 2. Choose the correct option which shows lung condition in emphysema and asthma respectively. तो emphysema में क्या डैमेज हो जाता है? That is alveolar valve डैमेज हो जाता है. एंड एस्मा में ब्रोंकियोल्स का कंस्ट्रिक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से फूल जाता है ब्रोंकियोल. तो एम्फाइसेमा यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन एस्मा में होता है. तो रेस्पेक्टिवली हमें देखना है. इंक्रीज तो डेफिनेटली नहीं होगा एम्फाइसेमा में. डिक्रीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल. वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4. Scientific name of flying fox is Pteropus. Then question number 166, graphical representation of the electrical activity of the heart during cardiac cycle is obtained by. बच्चों यहाँ पे दिया गया है it is obtained by which machine. तो मशीन के बारे में जब हम बोलेंगे that is electrocardiograph. जबकि अगर हम लोग बोल रहे हैं अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देन इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके. Which of the following is world's first non-hormonal oral contraceptive pills for female developed by the scientists of Central Drug Research Institute CDRI in Lucknow, India? So it is of course we know it is Saheli जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है एंड दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म इट फॉलो. एंड द नेक्स्ट वन इज अबाउट द मैच द फॉलोइंग ऑफ इवोल्यूशन एंड इट इज होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस विल बी 3. होमो निएंडरथैलेंसिस सबसे हाईएस्ट है ये. होमो इरेक्टस इज 900 एंड होमो सेपियंस जो कि काफी हद तक निएंडरथैलेंसिस से मिलेगा इट इज नंबर 2. इट इज ऑप्शन 1 is 3, 4, 1 and 2. 3, 4, 1 and 2. That is the fourth option is the correct one. Choose the incorrect option from the below regarding MTP. MTP, that is the medical termination of pregnancy. They are generally advised during the first trimester. Yes, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं किया गया, प्रेगनेंसी अगर ज़्यादा टाइम तक है रुका हुआ है, देन 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है. अदरवाइज जनरली क्या एडवाइस किया जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एमटीपी किया जाए. एमटीपी आर यूज्ड एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड. बच्चों कंट्रासेप्टिव जो है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए होता है, ना कि प्रेगनेंसी होने के बाद ऑपरेट किया जाने को कहा जाए. MTP are always surgical? No, because MTP medicine लेके भी किया जा सकता है. So MTP is not always surgical. MTP requires the assistance of qualified medical personnel. That is true, and we will go with option. Correct option दिया गया है. So 1 and 4 is our correct option. 1 and 4 is 3. Okay. Statement 1, nucleic acid would find in the acid insoluble fraction of any living organism. Yes, true, क्योंकि ये macromolecule है. It's a polynucleotide. Because nucleic acids are polynucleotide, that is also true. Both the statements are correct. Correct is 1. Sexually transmitted diseases are also known as, it is also known as venereal disease. It is also known as reproductive tract infection. So it is both 1 and 2.
PCR is used for amplifying the DNA. Option number 3. Statement 1. Each actin filament is made of a F, that is filamentous actin. It is yes, lekin it is not a. There are 2 F actin molecule. Then statement 2, muscle contraction is initiated by signal sent by the central nervous system via motor neuron. Correct है. Statement 1 is correct, but statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So we will go with the option 3. The lub and dub sound are due to the closing of the heart valves. Which of the following is not an advantage of the GM crop? Not an advantage. Increased crop tolerance to salt in the soil. ठीक है, it is an advantage. Increased reliance on chemical pesticides, it is not an advantage. वो reliance नहीं करने देता है, क्रॉप को टॉलरेंस लेवल उसका बढ़ा देता है, वो किसी केमिकल या फिर पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है. So it is not the advantage. Reduction in the post harvest losses, true है, वो advantage है इसका. Increased efficiency of mineral usage, this is also correct. So we will go with the option 2. Question number 177. Natural selection is based on certain observations which are factual. Yes, it is true. It is based on certain facts. Statement 2, fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by the nature. This is also true. Both the statements are from NCERT and they are correct statements. Dicer converts double-stranded RNA into single-stranded RNA, that is siRNA. Okay, small interfering RNA, छोटा छोटा RNA का स्ट्रैंड बना देता है ताकि वो जो टारगेट RNA है उसको जाके ब्लॉक कर पाए. In a protein, first amino acid is called the N-terminal amino acid, जो left side में मौजूद रहता है. Asterias has what kind of system? Asterias has the water vascular system. Water canal system is present in Podifera. Organ level of body organization, and no, they have organ system level of body organization, and they are triploblastic, no two jaundice. Red muscle fibers are rich in mitochondria, जिस वजह से वो क्या होता है, red in color होता है. Read the following statement and select the correct option. Okay, correct option select करने के लिए दिया है. During autoradiography, cells or colonies having the mutated gene do not appear on the photographic film. Correct है. Probe doesn't have the complementarity with the mutated gene. Correct. Both the statement are correct, and statement 2 is correct explanation. Okay, तो यहाँ पे assertion reasoning type से पूछा गया है. It is yes. Statement 2 is the correct explanation of 1. Both the statements are correct, and 2 is the explanation of 1. Aldosterone helps in the maintenance of the electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो इन सब चीजों को मेंटेन करने में मदद करता है. Because aldosterone acts mainly at the renal tubule and stimulates the excretion. No, it doesn't cause excretion. It causes reabsorption of the sodium ion and water and excretion of the potassium ion. ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 is true and reason is false. So we will go with the option 3. Which of the following process requires both strand of the DNA as a template? It is जब हम लोग इसको रेप्लिकेट करेंगे, जैसे कि PCR में देखते हैं दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल होता है to form the daughter strand. So it is DNA replication. Okay. Which of the following steps are catalyzed by the Taq polymerase in the PCR? It is the extension of the primer end on the template DNA. No doubt ये मौजूद रहेगा
डीनेचुरेशन प्रोसेस में, एनिलिंग स्टेप में, लेकिन वो मदद करेगा इन द एक्सटेंशन स्टेप. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इवन इफ they are present in denaturation step and annealing step. वो catalyze कौन से reaction को करेगा? Extension process. About 97% of the oxygen is transported by RBC and remaining 3% is what? It is dissolved in plasma and transported. Again, match the following. Let us go for it. Selectable marker, बच्चों, selectable marker. It identified the transform cell. 3. Blunt end is SMA. Chilled ethanol, it is for DNA precipitation. Plasmid is autonomously self-replicating. So it is 3, 2, 3, 2, 1 and 4. 3, 2, 1 and 4. 3, 2, 1 and 4. Yes? Stanley Miller observed the formation of amino acid. उन लोगों ने amino acid discover किया था after they have performed their experiment during his experiment. Okay. Which of the following bones is not part of the axial skeleton? Axial skeleton में hyoid bone होता है, sacrum होता है, sphenoid bone भी होता है, but clavicle is a part of appendicular skeleton. So it is option 4. Periodic abstinence is natural where the couple avoid or abstain from coitus during the period of menstrual cycle. जब there is a fertility period that extends from the 10th day to 17th day. इस दौरान ओव्यूलेशन का चांसेस बहुत हाई रहता है, जिस वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी से एब्सटेन किया जाता है. So it is the ovulation is most likely to occur, तभी abstain किया जाएगा. Periodic abstinence is a natural method where the couples avoid or abstain from coitus during the period of menstrual cycle when the ovulation is most likely to occur. Statement 1. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of digestion by restriction enzyme. Yes, correct. Because DNA is positively, no, DNA is negatively charged molecule. तो यहीं पे इसका खत्म. Statement 2 is incorrect. So statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. We will go with the option 2. Which of this is mandatory for all metabolic reactions? It is all metabolic reaction के लिए ये mandatory है. Breakdown of the molecule, synthesis of the molecule. बच्चों, metabolism मतलब ही होता है anabolism and catabolism. तो ये दोनों ही correct है. It is mandatory नहीं, ये तो होगा ही. Presence of inhibitor ये incorrect है. But presence of catalyst ये mandatory है. ये mandatory नहीं भी हो सकता. कभी कभार anabolic भी होगा, कभी कभार catabolic भी होगा. हमेशा inhibitor present नहीं रहता. लेकिन presence of catalyst ये must है. Right? The next point is, which culture system is used to obtain cells in exponential phase? Exponential phase में बार बार हमें कैसे कल्चर चाहिए to obtain our product? तो ये अगर बैच वाइज करेंगे तो फिर हमें कभी भी एफिशिएंटली हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. बार बार हमें रुकना पड़ेगा टू ऐड आवर रॉ मटेरियल्स. लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा? इट इज आवर कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम. सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन जो कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का हिस्सा है, by filtration centrifugation of the desired compound produced in the bioreactor is a part of, yes, of course it is a part of downstreaming process. Yes. The next one is, again match the following. Squamous epithelium is present in the lungs. Cuboidal epithelium, yes, ये भी करेक्ट ही दिया हुआ है. लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं. कंपाउंड एपिथेलियम, दैट इज ऑल्सो ट्रू.
And our answer is 1, 2, 3, and 4 is our correct option. So we are here in question number 196. Assertion is many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of the disease. It is true. Many transgenic assertion दिया है तो बीच में because लगा देते because many transgenic model exist for the treatment of human disease such as cancer. Yes, this is also true, but one doesn't explain another. Okay, these are actually from the benefits of the transgenic animals. If we want to recover more copies of the target DNA, then it should be cloned in a vector. बच्चों जो ओडाई होता है ना, origin of replication, वो ऐसा एक DNA sequence होता है that not only initiate our replication process but also controls the copy number. तो अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए कि हमें कॉपी नंबर ज्यादा मिले हमारा डिजायर्ड जीन को, तो हम ऐसे वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे जिसका ओडाई सपोर्ट करता है हाई कॉपी नंबर. So we will go with the option number 4. Then question number 198 again match the following. Podocytes जो है वो Bowman's capsule में होता है. Column of Bartini, it is the cortical extension of the in the medulla region. Brush bordered cell is present in the proximal PCT. Vasa recta helps in counter current mechanism. So we will go with 3, 2, 1, and 4. 3, 2, 1, and 4. Name the following compound shown in the figure. So यहाँ पे adenine लगा हुआ है. And this is the sugar molecule. So it is adenosine. Right? What is introduced into the lymphocyte to cure the ADA deficiency? Although it is not a permanent treatment, yet कुछ cells lymphocyte patient से बाहर निकाल के उसको treat किया जाएगा with the retrovirus which is carrying the complementary DNA. So it is ADA cDNA. With this, we end our session here. Thank you.